That's it. Perfect picture. Perfect time to make a picture, guys. All right, sir. Now, let me explain what this is. This is actually from Wikipedia. You can get it at Wikipedia. I've color-coded it and I put the dates in. That's the only thing that's missing, but the names are all there. These are the first 7. These are the 7 that they say are the ahruf. This is the creme de la creme. The first 7 that they say, not me, Muslims say, was revealed to Muhammad before he died in 632. Go ahead and translate that. Oh, वो कहते हैं कि ये जो 6 कुरान हैं, नाफे, इब्न कतीर, अबू आमिर का 7 इब्न आमिर का, आसिम का, और I don't know what's the second last name. Nafi Medina, Ibn Kathir, Malki, Maki, Abu Amir, Ibn Al-Ala, Ibn Amir, Asim, Hamza, and Al-Qisai. Those are the major 7. ये 7 जो हैं उसको वो major 7 कुरान की अहरूफ के साथ कहते हैं कि किरात से हैं. ये 7 हैं जो कि अर्लीस्ट हैं. ये जे स्मिथ और आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के मुताबिक नहीं है, मगर मुसलमान क्लेम करते हैं. Yes sir. Okay. Now here's where I'm going to shut this down real quickly. Notice when they died, each one of these. So Nafi died. Go ahead. कह रहे हैं कि आपको इनको नोटिस करना पड़ेगा कि ये मरे कब थे, फिर देखोगे कि क्या हुआ. Nafi died in 785. Ibn Kathir died in 738. Abu Amr died in 770. Ibn Amir died in 736. Asim 745. Hamza 772. Al-Qisai 805. None of these are in the 7th century. They're all 8th and 9th century. Awesome. I don't need to translate, just show the screen again. Perfect. तो जनाब ये वो बता रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गया. Yes sir. Next. Okay. Now these are the 7, right? Yes sir. But none of them were living when Muhammad lived. None of them knew Muhammad. Look where they come from. These two, Medina and Mecca. He comes from Basra. He comes from Damascus. He comes from Kufa, which is Iraq. He comes from Kufa, and he comes from Kufa. So of the 7, 5 of them don't even come from Saudi Arabia. They come from Iraq and Syria. Muhammad never controlled those countries. So how could they be people that who heard it from his lips? ये लोग मोहम्मद के मरने के एक तो इतनी दूर बाद आ रहे हैं, और मोहम्मद के इलाके से भी नहीं थे. बहुत सारे लोग इनमें से, कुछ बसरा में से, कोई कहीं से. तो भाई ये लोगों को किस तरह पता लग सकता है मोहम्मद के असल कुरान के बारे में? Very important question. Very, very important question. Not one of them was living in the century Muhammad lived. So how could they have heard him say this? How could they have received it? And how could they have been living hundreds of miles away from where Muhammad lived? And he never went to those countries and never went to those cities. ना तो ये मोहम्मद के पास थे, ना मोहम्मद से इन्होंने सीखा, ना मोहम्मद से इन्होंने लिया. मोहम्मद के पास वाली सिटी में भी नहीं थे, और मोहम्मद के मरने के कितनी देर बाद आए. तो मोहम्मद से इन्होंने अम्ब लिया था, इन्होंने कुरान किससे लिया था? ये सवाल है असल में. Yes sir. This is the canonized text. This is the Quran that everybody uses today. This is the Hafs Quran, right? The Hafs Quran. Yes sir, Hafs Quran. Yes, this is the Hafs Quran. Have you seen that in this list here? Nope. This is not even in that list. It's not even the first 7, the ones that are supposed to be the most authoritative. So where is Hafs? He's over here. In the third one, or third row. The third column, he is the second of 2 disciples that comes from a guy named Asam ibn al-Amjad from Kufa. He doesn't even come from Saudi Arabia. He comes from Kufa, and he died in 796. That means he wrote this in the late 8th century. He never knew Muhammad. He didn't even live in Mecca and Medina. He lived nowhere near Muhammad, was not in the same century, and his became the official one that is used today. Absolutely, brother, absolutely. So Hafs ने ये कुरान आसिम से लिया था, as you all know, Hafs and Asim. Hafs फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड कॉलम में नहीं है, थर्ड कॉलम में आता है. हफ्स ने आसिम से लिया जो कि उसने पीछे से लिया. नाउ बट ब्रदर, आई हैव अ क्वेश्चन, अ स्मॉल क्वेश्चन. डज अ मुस्लिम हैज द ओरिजिनल हफ्स version of Quran? They don't. Not one. No original for any of these. We don't have the originals for Nafi or Ibn Kathir or Amr or Ibn Amir, Isa, Asim, Hamza or Qisai. We don't even have original for any. But listen, we're talking about 7 here, 14 here. These were chosen in the 12th century in 1194 by a guy named Al-Shatibi. But that's not enough.
Exactly. So इसको which century Al-Shatibi took them? 9th, right? 12th century, 1194. 12th century. So 1194 में एक स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर हुआ शातिबी, उसने इन 14 किरात को पकड़ा था। उसने हफ्स को पकड़ा था, और हफ्स का कुरान, ओरिजिनल कुरान किसी के पास नहीं है। आसिम का कुरान किसी के पास नहीं है। That is 500 years after Muhammad. They still did not know anything about Hafs. Nothing. 500 साल, मोहम्मद के मरने के 500 साल के बाद भी हफ्स के बारे में किसी अम्ब को नहीं पता था। और शातिबी आ रहा है, वो बता रहा है 500 साल के बाद। Yes sir. Then in the 15th century, another 9 were chosen by Al-Jazari in 1429, then chose the other 9. So 9 plus 14 plus 7, that equals 30. 30 official Qurans. You're looking at them right now. Absolutely. So Al-Jazari ने 14th century के अंदर, Al-Jazari doctor, he is like 1350, right? So Al-Jazari would be 14th century. 1429, so that's 15th century. 1429. 800 years after Muhammad. उसने 1420, he died in 1429. So उसने 15th century के अंदर फाइनली ये 15 वर्जन्स पिकअप किए और उनके बारे में बताया, जिसके बाद लोगों को पता लगा कि कुरान के ये वर्जन हैं और कुरान के इस वर्जन को हमने अच्छा समझना है, और ये यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है। जबकि 15th सेंचुरी के अंदर उस बंदे को अम्ब का नहीं पता था कि ओरिजिनल वर्जन और हफ्स है ही नहीं। उसको नहीं पता था कि हफ्स ने अगर आसिम से लिया है तो आसिम का ओरिजिनल वर्जन दे डोंट हैव इट, इब्न कतीर का ओरिजिनल वर्जन दे डोंट हैव इट, none of these versions they had it. You're gonna love this. Yes, sir. This is the Hafs that I have in black here. That's the official one today. How many differences are there between these other 29 and Hafs? Here's the number right here. 93,263 differences. No kidding, sir. Can you please remove it? 93,263 different words, different phrases, different sentences, different verses, which means different doctrines, different theologies, and different practices between the 29 others and the official one that was chosen in 1924. Oh my goodness. Can you please move it up on the camera? Can you please move it up on the camera? Just a little angle. Your angle is a little wrong. I want people to have a picture perfect of it. A little back. Thank you so much, sir. Right here. Just for a second. People, now is the time to take a picture of this. Picture of this. Awesome. Guys, जिसने picture नहीं ले ले. Now, साहिल भाई मैं आपके पास जाऊंगा. Just give me 1 minute, साहिल भाई. देखो ये डॉक्टर जेसमित क्या बता रहे हैं. 93,000 डिफरेंस हैं. 93,263 डिफरेंसेस हैं हफ्स के इस वर्जन के बाकी लोगों के वर्जन ऑफ अरबी कुरान के साथ. हमारे मुसलमान क्या कहते हैं, एक नुक्ता चेंज नहीं हुआ, एक जेर जबर पेश चेंज नहीं हुआ. मैं कहता हूं भाई 93 डिफरेंसेस में कितना कुछ चेंज हो गया हुआ है. और साहिल भाई ने अपने एक चैनल पे एक दफा हफ्स और वर्श के दरमियान डिफरेंस दिखाया था. मोटे डिफरेंस, छोटे डिफरेंस इतने ज्यादा हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है. साहिल भाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? सॉरी सर. These are the I was telling that. Yes, sorry, I was telling that if there is a major one more observation in that. See, the first 7 numbers or the names that you have in the list, they all are from the same century, right? No, they're the from first 7 ones. 7th and 8th. 8th and 9th, sorry. 7th and 8th. 8th and 9th. हाँ, तो इसमें major point. Okay, even if you consider 8th century, so most of them are from the 8th century, right? तो इसमें एक major observation ये है कि एक ही सेंचुरी में होने के बावजूद भी अलग-अलग कुरान है. मतलब एक सेंचुरी में होते हुए भी उनके पास सेम नहीं था. Because they are writing on different locations. Yeah, because they are writing it on different locations. They had no idea what Muhammad said. तो यहाँ से वहाँ क्या चल रहा था वो भी आइडिया नहीं था उनको. Absolutely. I'll show you why everything went wrong. But hold on a minute. Before we get to that, I just want to show these two here. Yes, sir. These two are the most authoritative. These are the most popular today. This Hafs one, and Warsh. This is Hafs here. This is Warsh. This is used all over North Africa. This is used by 93% of all Muslims today. Just these two versions are the most important. Now, how many differences between these two? 8,000. 5,000. Oh. 5,000 differences just between these two right here. Go ahead, translate that. Oh, that's easy English. So continue. Hafs and Warsh जो है, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है. वर्श जो है तमाम नॉर्थ अफ्रीका में यूज होता है, जहां पे सबसे पहले मुसलमानों ने कब्जा किया था.
वर्ष वर्जन वहां पे यूज होता है। हफ्स वर्जन आपको पता है क्योंकि कायरो ने बनाया था तो वो इधर ईस्ट में ये आ गया था। इन दोनों मेजर दो चलने वाले कुरानों के दरमियान भी 5000 डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान भी। यस सर। So how in the world did they have this problem? Where did it all come from? Let me explain it to you. गुड। वो कहते हैं कि जनाब ये प्रॉब्लम आई कहां से। अब मैं वो बताता हूं आपको कि प्रॉब्लम आई कैसे। Here is a manuscript from the 8th century. This is one of the earliest. This is called the Topkapi. You notice it has no dots and it has no vowels. Absolutely. वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये तुर्क कॉपी का मैन्युस्क्रिप्ट है, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट है। इसके अंदर आपको कोई डॉट कोई कुछ नजर नहीं आएगा। And this is what Arabic was like in the 7th century. It was very crude. It was borrowed. It had been borrowed from Syro-Aramaic. Aramaic was the language of theology for the Christians. ये उन्होंने चूंकि ये चीज उन्होंने पकड़ी है अरबी से, और नॉर्थ में अरबी चलती थी, वहां पे ही अरबी चलती नहीं थी। ये देखिए मैं सामने ले आता हूँ। इसके अंदर कोई भी आपको नुक्ते जेर ज़बर पेश, जिसे डायक्रिटिकल मार्किंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर, आपको नहीं नजर आ रहे, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो लिहाज There was only 14 consonantal letters in Arabic in the 7th century. That means without any dots, with any vowels, 14 consonantal letters, which no one could read because you didn't know what one letter could be 5 different words. Absolutely. Sorry. डॉक्टर जी कह रहे हैं कि पुराने जमाने में, उस जमाने में सिर्फ 14 अल्फाबेट्स थे अरबी के अंदर। इस वक्त अगर आपको पता है कि 28 अल्फाबेट्स हैं अरबी के अंदर, 14 लेटर के अंदर पूरी की पूरी अरबी लिखी जाती थी। लिहाजा आपको अंब का पता नहीं था कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि नुक्ते शुक्ते बाद में आए हैं। Yes, doctor. So, in the 8th century, they decided to add some dots to these letters. So if you have just a smiley face, which is a general letter, if you put one dot above it, it becomes a noon or an N letter. If you put 2 dots above it, it becomes a T, like a T we have. If you put 3 dots above it, it becomes like a TH, a th letter. If you put 1 dot below the smiley face, it becomes a B. If you put 2 dots, it becomes a Y. So na, ta, tha, ba, ya. डॉक्टर जी जो बता रहे हैं वो सिंपल ये बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये वाला लेटर लें सिर्फ और सिर्फ, तो इसके ऊपर अगर आप 3 नुक्ते ऊपर दो नुक्ते ऊपर डाल देंगे तो ता बन जाएगा, विच इज टी। अगर आप इसके ऊपर, इसके नीचे 1 नुक्ता डाल दें तो बा बन जाएगा, विच इज बी। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली ले रहे हैं जो कनेक्टेड वर्ड्स के अंदर ले रहे हैं, नॉन कनेक्टेड वर्ड के अंदर नहीं ले रहे, तो अगर सिर्फ ऐसे ही और कनेक्टेड वर्ड के अंदर हो, और इसके अंदर अगर हम नीचे नुक्ता डालने की बजाय ऊपर नुक्ता डाल दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा नून, विच इज एन। ठीक है। सो इस एक हिस्से से आप क्या ले सकते हैं? आप बा ले सकते हैं, आप ता ले सकते हैं, आप नून ले सकते हैं, ठीक है, आप या ले सकते हैं। सो आप बा ले सकते हैं, ता ले सकते हैं, नून ले सकते हैं, आप या ले सकते हैं, या आप इससे और क्या ले सकते हैं? दिस इज यू कैन चेंज। सा भी ले सकते हैं, 3 नुक्ता ऊपर। Exactly. You can change it. 2 below. So 3 dots, 3 sets of dots above or 2 below. By the time they did that, then they could read the letters. However, what about the dialects? In order to have a dialectical difference, you need to add 3 vowels. You need to add the fatha, which would be the just the slide. Zay zabar pe, zay zabar. Yeah. So then you can actually, kasra would be the e. Exactly. So then you can actually say ba zabar ba, or if you have a zir, you can have ba zir b, so ba b, or ta t, or you can actually have a pesh as well. Or right? Yeah, there's 3 vowels, a, e, and u. Thank None you. of these existed in the 7th century. They didn't exist. So ज़ेर ज़बर पेश की वजह से आपका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के अंदर डिफरेंस आ सकता है। ज़ेर ज़बर पेश की और उसकी वजह से आपके पास तालामून, यालामून, बालामून, you can make so many words out of simply one single word.